अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं तकसीम स्क्वायर पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये तुर्की का वो एरिया है जहाँ पे जो भी टूरिस्ट जिस भी कंट्री से हैं यहाँ पे मस्ट विज़िट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती रही है, लेकिन उसके बाद जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। और जिस दिन हम पहुँचे हैं वहाँ पे उस दिन वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था और प्रॉपर जो है वो स्नो फॉलिंग हो रही थी। Friends, I really like these cubes, these sugar cubes. I like them. They serve you with every drink. नाश्ता करने के बाद मैं आ गया ग्रैंड बाज़ार में। इट्स अ रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। होलसेल की काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, तो मैंने भी यहाँ का विज़िट किया। अवेलेबिलिटी काफ़ी सारी चीज़ों की थी, लाइक कॉस्मेटिक की शॉप्स हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, क्लॉथ्स की शॉप हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ से। मैंने भी फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने भी यहाँ से ही शॉपिंग की है, ग्रैंड बाज़ार से। कंपैरिजन प्राइसेस भी मुझे अच्छी मिल गई हैं जो मॉल्स वगैरह में अवेलेबिलिटी थी प्राइसेस के हवाले से। आप भी जब आएँ मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि ग्रैंड बाज़ार का मस्ट विज़िट करें। यहाँ से आपको चीप और अच्छी क्वालिटी में जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरा, यहाँ से जो नज़दीक है ग्रैंड बाज़ार से काफ़ी सारी जो तुर्किश अपनी इनकी लोकल जो मार्केट है उसके भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में भी ये पर्स वगैरह हैं, ये आपको बाहर से नहीं मिलते, ये ओरिजिनल हैं और ये ओरिजिनल तुर्किश लोग ही जहाँ पे सेल करते हैं और उन्हीं से मिलती हैं। यहाँ से भी मैंने फैमिली के लिए तुर्किश पर्स लिए, प्लस मैंने ब्लू आइज़ बाई की और सब कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल गया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ तुर्किश एयरलाइन के ऑफ़िस के बाहर तकसीम स्क्वायर के साथ। जो है उसकी रीज़न ये है कि कल नाइट की जो मेरी फ़्लाइट है अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गई, एंड द रीज़न बिहाइंड वाज दैट कि मैं शॉपिंग से आया था बहुत थका हुआ और आके मैं होटल में सो गया। जिस टाइम मेरी आँख खुली उस टाइम फ़्लाइट में रह गए थे ओनली 2 hours and 20 minutes विच वाज नॉट इनफ फॉर मी टू मेक टू द इस्तांबुल अतातुर्क एयरपोर्ट, जिसकी वजह से मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो फ़्लाइट ऑलरेडी जो है वो मेरी फ़्लाई कर चुकी थी थाईलैंड के लिए। तो उस वजह से जो है वो फ़्लाइट तो मैं मैच नहीं कर पाया और अभी मैं तुर्किश एयरलाइन के ऑफ़िस आया हूँ। लेट्स सी व्हाट सॉल्यूशन दे गिव मी। अच्छा दोस्तों, काफ़ी मेहनत और काफ़ी बहस मुबासे के बाद अभी फाइनल ये हुआ है कि तुर्किश एयरलाइन ने हमें न्यू टिकट इशू कर दी है और उन्होंने जो चार्जेस हमसे डिमांड किए थे वो तकरीबन 180 यूरोस फेयर डिफरेंस और नो शो का जो होता है चार्ज अगर आप एयरपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंचते तो उसके लिए। लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई और उनको सारी डिटेल्स वगैरह शो करने के बाद उनका जो मैनेजर था उन्होंने जनाब 35 जो डॉलर थे उसमें हमारी टिकट इशू कर दी है न्यू। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं गुजरा था, मैंने सोचा आपको प्याज का भाव भी बता दूं। 2 तुर्किश लीरा जो है वो यहाँ पे केजी है, ठीक है। ये प्याज लगे हुए हैं, आलू लगे हुए हैं, पोटैटोज जो हैं वो 6 तकरीबन 5.97 तुर्किश लीरा हैं और आलू भी काफ़ी साइज़ में बहुत बड़े हैं। यहाँ पे ये बंद गोभी लगा हुआ है 2.99 kg, प्रमोशन में है, पहले तो 4.75 थी। So guys, you can get an idea of the prices as well. Look at this, and it's very cheap, very cheap. 9 Turkish lira, almost 10 Turkish lira, less than $1 for a kg. I think it's a good price. Few moments later. वापस आके मैं सो गया था, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ तो इस्तांबुल में जो है वो इस टाइम बारिश हो रही है, इसलिए फिर मैंने कैब को कॉल की है और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए सिटी सेंटर में।
वहाँ पे बहुत मज़े के रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम आज अपना डिनर करेंगे और प्लस देखते हैं कि सिटी सेंटर में कौन कौन सी शॉप्स जो हैं वो नाइट में ओपन होती हैं। साथ कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और प्लस आपके साथ सिटी सेंटर का जो है वो व्यू भी शेयर करूँगा। तो चलिए चलते हैं। Mustafa ya Mustafa pek ya Mustafa ya Mustafa maşallah tabi başış Mustafa pek ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa pek ya Mustafa ceri cödeme ceri cödeme Komala salça döpemedir ya Mustafa ya Mustafa pek ya Mustafa. Look at this guy. This is something interesting I have seen on the Taksim Square. Look at this. This is an art, I think, and this is beautiful. I really love it. You know what they do with it? This is butter, and they are using it in the potatoes. You can see there. Yeah, you can choose from this your flavor, whichever you want, which one you like. And then you can see we are adding it inside. Oops, that's like a bomb. Oh my god. The next day. तो इस टाइम मैं तुर्किश एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। तो चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग करने के बाद जो है इमिग्रेशन के पास जाएंगे। तो अभी देखते हैं चेकिंग का प्रोसेस क्या है। अगर कैमरा अलाउड हुआ तो आई विल ट्राई टू शो यू ऑल द चेकिंग प्रोसेस। आई जस्ट ट्राई टू मेक check in through self machines there, you can see behind me, but unfortunately I was unable to do it. I don't know, it's maybe not working right now, or maybe not available for Pakistani passport, but let's see and try to do a check-in here. Okay guys, after boarding process, now we are going ahead to immigration process, which is gonna be done here. You can see this is the immigration process, and here we need to do it. This is for international departures, you can see. So let's hunt for it. अच्छा गाइस, मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट की लॉबी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्जिद का भी इंतज़ाम है। तो चलिए यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। अभी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, और जो फ़्लाइट की टाइमिंग है वो तकरीबन 1:55 पे, और उस हवाले से जो गेट नंबर है वो D12 है ना। तो चलिए अपने गेट पे चलते हैं, ताकि कल की तरह जो है आज फिर फ़्लाइट मिस ना हो जाए। तो आपको एंड तक दिखाऊंगा सारा प्रोसेस, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। तरफ जाना है गाइस, गेट डी जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है बहुत। तो चलते हैं इस तरफ। D1 to D70. Okay. It's downstairs. That means, guys, we have to go downstairs, because Delta 1 to Delta 70 is downstairs. So we need to move towards down. Stay on the video. I will try to make the out for you.
يقرأ سنتين بالزبط. Okay guys, so all good. Delta was the only gate which was far away rather than all other gates. That's what I was seeing from my coffee shop, because there was a front screen and it was mentions distance from there to the Delta gate, and that is the most far away gate which it was. And you can see it take like more than 15 minutes as it was mentioned on the screen. This is Delta 1 guys. Okay guys, it's time to say goodbye to Turkey finally and move to the next destination. Okay guys, everything is good. Alhamdulillah, it's went according to the plan. So we are about to on board. You can see this is our plane. मेरी ये जो फ़्लाइट है ये इस्तांबुल तुर्की से है थाईलैंड बैंकॉक के लिए. टोटल ड्यूरेशन ऑफ फ़्लाइट है तकरीबन 8 आवर्स का और विदाउट स्टॉप ले ओवर. इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में थाईलैंड बैंकॉक से. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. चैनल को काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.